Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know that we are dealing with the parts of speech, and in previous lecture we discussed about the parts of speech, and then after we discussed about nouns and their kinds. Now today we have the second type, that is pronouns. So first of all we have to see the definition of pronouns, because if we don't have the basic definition of pronouns, then we will not be able to deal with the kinds of pronouns. So if we see towards the word pronoun, if we break it here, pronoun, pro means basically for, and this is here noun, and you know noun is a naming word. So that means pronoun is a word that we use for a noun, that means in place of a noun, मतलब noun की जगह ये हम इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में हम इसे क्या बोलते हैं, इसमें ज़मीर। और चूंकि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे जब क्रिकेट मैच होता है हम एक एक्स्ट्रा प्लेयर अपने साथ ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग प्लेइंग इफ एनी प्लेयर गेट्स इंजरी, अगर कहां प्लेयर जख्मी गसान तम सद बदल पे एक्स्ट्रा प्लेयर सह वालन पन्ने बदल पे अंपायरस वन क्या यह हसा मे बदल सबस्टिट्यूट, दैट इज वाई वी आल्सो कॉल इट substituted word. And why do we use pronouns? So as to avoid the repetition of nouns, ताकि अस करो कह नाउन बार बार इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल अगर बह वही वन साकिब इज अ बॉय, ठीक है, साकिब लिव्स एट हाकुरा, साकिब स्टडीज इन दिस क्लास, तो अगर मैं साकिब बार बार इस्तेमाल करूंगा तो जो सुनने वाले होंगे वो भी बोझ हो जाएंगे ये नाम बार बार सुनते सुनते। इसलिए इंग्लिश ग्रामरस अंदर लेसन अख प्रोनाउन यथ वन इसम ज़मीर, यह अमी मूजूब कर इस्तेमाल ताकि नाउन करो न बार बार इस्तेमाल क्या। अब जो हमारे पास प्रोनाउन्स के टाइप्स हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द पर्सनल प्रोनाउन्स, वी हैव द रिलेटिव प्रोनाउन्स, एंड द नेक्स्ट वन वी हैव द indefinite pronouns, we have the reflexive pronouns, we have the possessive pronouns, we have the emphatic pronouns, we have the distributive pronouns, we have the interrogative pronouns। मतलब बहुत कई अकसाम है हमारे पास pronouns की, लेकिन we will deal only with those that will be helpful to us, जो हमारे काम के आएंगे। So personal pronouns क्या होते हैं? जो पहला टाइप होता है, पहले हम यही पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। बेसिकली these pronouns are used for persons and sometimes also with things also। यम च इंसानस इंडिकेट करन और कुछ साथ चीज खतर इस्तेमाल करन। वह जन पर्सनल प्रोनाउंस अगर वो उमन अलग अलग किस्म, कुछ सात हेको यूज कर एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब तर्जे यानी कि जन सेंटेंस सब्जेक्ट फाइल कुछ सात तर्जे, कुछ सात एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जन ऑब्जेक्ट वर्ब पत, ठीक, कुछ सात पोजेशन हावन। गो यमन जन प्रोनाउंस इमन अलग अलग फॉर्म्स, दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स, समझ या कुछ सात तुम फॉर एग्जांपल हावन अगर कह यह कम कर, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हेको इस्तेमाल कर। मगर तम ब्रोह करो पर्सनल प्रोनाउन हंद त्रे किस्म बयान, सह गो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आ गो फर्स्ट पर्सन, ब्या गो सेकंड पर्सन और ब्या गो थर्ड पर्सन। यह जन फर्स्ट पर्सन अमिस वन स्पीकर, यानी कि उर्दूस अंदर वन होस मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कुछ गो बात करने वाला, कुछ गो बात करने वाला, वन हु स्पीक्स, इस बोलन आसे सह गो फर्स्ट पर्सन। और अत मज कुछ फॉर एग्जांपल बह वन आम अ स्टूडेंट, गो मे क्या कोर पन्ने खतर इस्तेमाल आई, गो अत मज आई। वह अगर वारिया आसन कथ करन, अगर तुम वनो बोजान तुम क्या वनो वी,
गो ये फर्स्ट पर्सन मगर प्लूरल सेकंड पर्सन गो वन हु लिसन्स सुनने वाला अमिस वन मुखातब क्या वन या हाजिर ब्रोट कन बोजन वोल सेकंड पर्सन फॉर एग्जांपल बह क्या कर तुम खतर इस्तेमाल कुछ प्रोनाउन यू चाहे बोजन वोल अकुई या वारिया यू अत ड्यूअल फंक्शन इथ कन फॉर एग्जांपल मेडिकलस में पार्टिकल नेचर ना तुम पार्टिकल नेचर या सह वेव नेचर पढ़ान सह ड्यूअल नेचर इथे कन यू कर अकिस खतर बह वन यू आर अ बॉय बह दप यू आर बॉयज इथे कन यू आर अ गर्ल यू आर गर्ल्स यू आर अ स्टूडेंट यू आर स्टूडेंट्स इथे कन थर्ड पर्सन गो अबाउट होम वी स्पीक यमिस मुतल्लिक कथ आसो करान और उर्दूस अंदर तमिस वन गायब क्या वन गायब वन यह थवन दिमागस अंदर कह सह ये मौजूद ना वो तो यहाँ भी हो सकता है सामने सह हेतन तथ मगर असो तमिस मुतल्लिक कथ कर यमिस मुतल्लिक कथ करो सह हे अतन या सह हे मौजूद तमिस गायब वन फॉर एग्जांपल अगर सह मेल फॉर एग्जांपल क्या करो तम खतर इस्तेमाल ही इफ अगर समय फीमेल तेल करो शी अगर तुम वारिया तेल क्या करो इस्तेमाल तेल करो इस्तेमाल दे ठीक छा या इट एज अ थर्ड पर्सन इस्तेमाल करान छोटिस मज कथ थो वो याद यह फॉर एग्जांपल अगर कंपटीशन ठीक छा कुछ जगह गो कंपटीशन अस दुत एग्जाम वो बोलन वोल प्रेथ कह इंसानस अंदर कन फितरतन लालच रबन थोमुत मिसाल के तौर पर यह फितरतन अगर बह वो कथ कर वोल बह दप ऐ गई फर्स्ट पोजिशन कि मे गई फर्स्ट पोजिशन बह दप ना तुम ना कह मे गई फर्स्ट पोजिशन मे गई फर्स्ट पोजिशन तुम गई सेकंड पोजिशन और तमिस अकिस गई वेरी गुड यह थवन याद मे क्या दोप मे गई फर्स्ट पोजिशन तमें वन गो बस फर्स्ट पर्सन क्या फर्स्ट पर्सन तुम गई सेकंड पोजिशन ठीक छा गो तुम सेकंड पर्सन तमिस गई थर्ड पोजिशन गो सह थर्ड पर्सन ठीक छा फर्स्ट सेकंड तो थर्ड फर्स्टस मज आई बी वी यम कथ कर वल सिंगुलर या कुछ साथ प्लूरल इथे कन सेकंड पर्सन कुछ साथ सिंगुलर कुछ साथ प्लूरल थर्ड पर्सन इथे कन कुछ साथ सिंगुलर कुछ साथ प्लूरल वो वो यम सात प्रोनाउन्स इस्तेमाल कर यम सात अलग अलग फॉर्म्स वो यम सात प्रोनाउन्स इस्तेमाल गसन एज द सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यम सात मतलब एज द सब्जेक्ट करो इस्तेमाल तम सात कस शक्ल कथ कन लेखो अगर गोड तुलो फर्स्ट पर्सन कुछ गो बात करने वाला मुतकल्लिम वन हु स्पीक्स तम वाल गो अगर सिंगुलर अगर सिंगुलर यह कर आई इस्तेमाल और अगर मैं यह आई फॉर एग्जांपल दप आई एम अ स्टूडेंट आई लिव एट हाकुरा आई स्टडी इन क्लास 7th या पढ़ान गो यह कर आई पन्ने खतर इस्तेमाल मगर आई क्या कोर इस्तेमाल एज सब्जेक्ट वह अगर यह वन आई कर इस्तेमाल मगर एज ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल दपो तम हसा दिस मे 10 रुपये बह दप ही गेव मी गो मी युजन यह मे कुन करान क्या इशार मगर इस मी आव अथन यह आव एज सब्जेक्ट वो यह आव एज ऑब्जेक्ट वो यम साथ एज ऑब्जेक्ट यी तम सात लेखो अथन आई क्या तम सात क्या लेखो मी इधर देखिए वह अगर यह पोजेशन हावन फॉर एग्जांपल दप यह मोन पेन बह क्या दप दिस इज बह हेक दोयो तरीको वन या वन बह दिस इज माई पेन यह मोन पेन या दिस इज माइन या दिस पेन इज माइन मगर अथन दिमाग थवन जबरदस्त कंसंट्रेटेड तिकाज अगर बह वन दिस इज माई पेन मैं कोर माई इस्तेमाल लेकिन ये उस वक्त प्रोनाउन नहीं होगा दैट विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव तिकाज एडजेक्टिव इस्तेमाल करन कुन नाउनस मॉडिफाई करने खतर और यम सातन त प्रोनाउन आसि नाउनस ब्रोट फॉर एग्जांपल दिस इज माई पेन पेनस क्या बुथ माई गो अम कोर यह पेन मॉडिफाई बनो अथन एज एडजेक्टिव अगर मैं इस्तेमाल आस कर फर्स्ट पर्सन एज पॉजिटिव प्रोनाउन देन आई विल ऑलवेज यूज माइन
बह कर हमेशा माइन इस्तेमाल यह माइन पॉजिटिव प्रोनाउन मगर माई पॉजिटिव एडजेक्टिव ये आपको याद रखना है अत मज गलत फहमी गई और माई अगर मैं हाउन मैं हसा कोर पान आई डिड इट माई सेल्फ मैंने खुद किया मैं हसा कोर पान और यम जन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हावन अमिस इंसानस कुन इशार करान अत कथ चीज बनावन अत लगान अगर सिंगुलर सेल्फ अगर प्लूरल तेल क्या लगान सेल्व्स ठीक गो माइस करो सेल्फ एड ये माई सेल्फ वन इथे कन अगर वह फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या बह हाव ये सिर्फ पी एल सी प्लूरल यानी कि जमा अगर कथ कर वाल तुम करें वी इस्तेमाल मगर दे विल यूज वी फॉर द सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट तुम करें इस्तेमाल सब्जेक्ट खतर वी अगर वह तुम वन हे तमो हसा दिस 10 रुपये दे गेव अस गो आज गस इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट तमो हसा दिस इथे कन वह अगर पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल दपो दिस हाउस इज अवर्स यह मकान सोन अगर तुम वनो दिस इज अवर हाउस तम वल गो तुम करू अवर इस्तेमाल बट दैट विल नॉट बी यूज्ड एज द पॉजिटिव प्रोनाउन दैट विल एक्ट एज द पॉजिटिव तिकाज तथन आव दिस इज अवर हाउस हाउसस ब्रोट कन आव अवर यम सात प्रोनाउन ये नाउनस बुथ नाउनस तम सात मॉडिफाई कर और इस नाउनस कर मॉडिफाई तथ प्रोनाउन वन कह उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्या वन एडजेक्टिव वह अगर इथे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी डिड इट आवर सेल्व्स असा कोर पान या वी फिनिश्ड दिस लेसन आवर सेल्व्स असा मकलो यह लेसन कंप्लीट कर पान वन इथे कन सेकंड पर्सनस मज यू आर स्टूडेंट्स गो मैं कोर गोडनेथ एज सब्जेक्ट क्या कोर मैं इस्तेमाल मैंने यू इस्तेमाल किया और याद रखना है मैंने अभी भी बताया कि ये हम एज सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल भी चाहे बोजन वोल अख या वारिया चाहे बोजन वोल मेल या फीमेल सो लड़का या सा कूड़ समझ में आया यू हम हर किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन एज सेकंड पर्सन मतलब इम सात सेकंड पर्सन इस्तेमाल करो और वह वन तम दिस 10 रुपये ही गेव यू गो अत यू कर इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट ठीक ऑब्जेक्ट केसस अंदर वह वन बह मकान तुंद बह क्या वन दिस हाउस इज योर्स यह क्या बनो पॉजिटिव प्रोनाउन तिकाज दिस हाउस इज योर्स ये मैं योर्स कोर इस्तेमाल तम गो अम योर्स बनो यह मकान तुंद समझ आवा पोजिशन अथन हावन वह वन बह दिस इज योर हाउस योर क्या तम सा एज प्रोनाउन नो इट विल एक्ट एज द पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर बह वन हैव यू डन इट योरसेल्व्स हैव यू डन इट योरसेल्व्स गो योरसेल्व्स यह एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या तुम कर यह काम पान यह गो सेकंड पर्सन नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन क्या वो मैं मतलब गायब अबाउट होम वी स्पीक या सह कह चीज मुतलिक कथ या यमिस मुतलिक कथ कर सह गो थर्ड पर्सन ठीक वह अगर सह सिंगुलर मगर मेल तम सद खतर करो ही इस्तेमाल सो ही ठीक ही इज माई फ्रेंड गो ही कोर मैं एज सब्जेक्ट इस्तेमाल अगर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर इथे कन अगर मैं ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर वनो दे बीट हिम ठीक हिम करो इस्तेमाल क्या एज ऑब्जेक्ट अगर एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर इथे कन वनो हिज करो पॉजिटिव प्रोनाउन दिस पेन इज हिज यह तम सुन पेन ठीक पॉजिटिव प्रोनाउन अगर इस्तेमाल या दिस पेन इज हिज वह अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर दिस इज हिज पेन हिज कतन आव इस्तेमाल कर नाउनस बुथ कन गो यह कर फंक्शन क्या एज एडजेक्टिव इथे कन he fell himself on the ground सह पे पान तमिस ना दित मे दक तमिस ना दित यम दक तमिस हसा लोग पान खुन सह पे पान he fell himself on the ground हे च लाग यमिस इल्जाम कह वन थर्ड पर्सन वह अगर फीमेल पत सह सिंगुलर तम सद खतर क्या करो इस्तेमाल गो यह सिंगुलर मगर फीमेल शी फॉर एग्जांपल शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल
she is a nice student, she is a hard working student गो she कोर में इस्तेमाल as a subject वहीं अगर मैं object ऐसे इस्तेमाल करूं वो क्या कर her वहीं अगर मैं possessive pronoun ऐसे इस्तेमाल करूं hers ठीक है अगर possessive adjective ऐसे इस्तेमाल करूं तेल क्या करो तेल करो her अगर reflexive pronoun ऐसे इस्तेमाल करूं तेल क्या करो herself she wrote her homework herself पद गो it तिश third person मगर singular खतर for example it is checking down cats and dogs it is checking down cats and dogs ये रूद हासा छु वसन जबरदस्त it is checking down यथ आज वन इस इस्तिलाहस अंदर 4G रेनिंग 4G रूद छु वसन छना वनन अस हको करित इस्तेमाल ये फ्रेज ते it is checking down cats and dogs या हको इस it is checking down buckets of water बाल्टिनो वो आब वसन ठीक छ गो मे कोर अथन it इस्तेमाल as a subject have you done it ठीक छ गो ये गस as object इस्तेमाल मगर possessive pronoun छन ये इवन इस्तेमाल करना टोटल न कहीं possessive pronoun फंक्शन छन तो न हको इस्तेमाल करिथन और इस possessive adjective छु its छ इस करन इस्तेमाल छना अगर itself reflexive pronoun वन लास्ट का सु गो दे मतलब गो तुम फीमेल अस्तन या मेल अस्तन थर्ड पर्सन मगर अगर तुम एक खुद ज्यादा जमा गो ये क्या प्लूरल दे गई तुम फॉर एग्जाम्पल बन दे आर माई क्लासमेट्स तुम हसा मेन क्लासमेट गो दे कोर मैं इस्तेमाल एज सब्जेक्ट हाउ यू मेट देम क्या चे कोर तुम सी मुलाकात ठीक छा गो देम गस इस्तेमाल एज ऑब्जेक्ट या बन फॉर एग्जाम्पल आई सा देम एट डैश मे हसा वुच तुम देम गो एज ऑब्जेक्ट बन इट इज देयर्स यह हसा तिहुंद गो यह गस पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है यथ थो ख्याल यथ ज्यादा तिकाज यथ यथ मन गसन शकूक शुबहात गसन स्टूडेंट डाउट्स गसन क्लियर मतलब डाउट्स यम गसन पत तेली क्लियर एल तुम गोडनेथ असल पर समझन ये टॉपिक नत आसन डाउट ही डाउट और अगर इस पॉजिटिव एडजेक्टिव करो इस्तेमाल दिस इज देयर बुक ये उनकी किताब है यह तिहंज किताब यथाय कन दे हैव क्लीनड दिस रूम themselves अगर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूँ या वह समझ असल पे नाउ इफ एनीवन हैज एनी डाउट they can whether it is he or she they can comment in the comment section okay assalamu alaikum